சூரவன்மார்பை தடிந்த வேல் குமரன் தாதைனர் கொளம்பம் மேவிய சமரசூரவன்மார்பை தடிந்த வேல் குமரன் தாதைனர் கொளம்பம் மேவிய அமர்கோவினுக்கு அன்புடை தொண்டர்கள் அமரர் கோவினுக்கு அன்புடை தொண்டர்கள் அமரர் லோக மதளுடையார்களே தோடுடைய செவியன் தோடுடைய செவியன் விடையேறி ஓர்த்துவன் மதிசூடி தோடுடைய செவியன் விடையேறி ஓர்த்துவன் மதிசூடி காடுடைய சுடலை காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளம் கவர் கள்வன் காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளம் கவர் கள்வன் ஏடுடைய ஏடுடைய மலரான் ஏடுடைய மலரான் முனை நாள் பணிந்தேத்த அருள் செய்த ஏடுடைய மலரான் முனை நாள் பணிந்தேத்த அருள் செய்த பீடுடைய பிரமாபுரோ வீடுடைய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவனன்றே வீடுடைய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவனன்றே அருணெறிய மறைவல்ல முனியகந்தன் பொய்கை அலர்மேய அருள் நெறிய மறைவல்ல முனியகந்தன் பொய்கை அலர்மேய திருநெறிய பிரமாபுரம் திருநெறிய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவன் தன்னை ஒரு நெறிய மனம்பை துணர் ஞான சம்பந்தன் உரை செய்த ஒரு நெறிய மனம்பை துணர் ஞான சம்பந்தன் உரை செய்த சம்பந்தன் உரை செய்த சம்பந்தன் உரை செய்த திருநெறிய தமிழ் வல்லவர் திருநெறிய தமிழ் வல்லவர் தொல்வினை தீர்தல் எளிதாமே. சிவாய திருச்சிற்றம்பலம். ஓம் நம சிவாய. संवर्धाग्नि प्रदीप्त कनक प्रस्पर्ति तेजोरुणं गंभीरध्वनि सामवेद जनकं ताम्राधरं सुंदरं अर्धेन्दुदुतिलोल पिंगल जटाभार प्रबद्धोदकं वंदे सिद्धसुरासुरेन्द्र नमितं पूर्वमुखं शूलिनः. ओं नमो भगवते रुद्राय. ओम ह्रीं नमः शिवाय. पूर्वांगमुखाय नमः. तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्. अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः. कालाभ्रभ्रमराञ्जनदुतिनिभं व्यावृत्तविङ्गेक्षणं कर्णोद्भासितभोगिमस्तकमणिं बृहत्भिन्नदंष्ट्राङ्कुरं सर्पप्रोतकपालं शुक्तिसकलं व्याकीर्णताशेखरं वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य वदनं चाथर्वनादोदयम्. ॐ नमो भगवते रुद्राय. ॐ ह्रीं नमः शिवाय. दक्षिणाङ्गमुखाय नमः. सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः.
भवे भवेनाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः। प्रालेयाचलमिन्दुकुन्दधवलं गोक्षीरफेन प्रभं भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदहनं ज्वालावलीलोचनं ब्रह्म विष्णु मरुद्गणार्चितपदं ऋग्वेदनादोदयं वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थानोर्मुखं पश्चिमम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय पश्चिमाङ्गमुखाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमतनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। गौरं कुङ्कुमपङ्कितं सुतिलकं याभाण्डमण्डस्थलं भ्रुविक्षेपकटाक्षवीक्षणलसत् संसिक्तकर्णोत्फलं स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालाङ्कृतं वन्दे याजुषवेदघोषजनकं वक्त्रं हरस्योत्तरम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय उत्तराङ्गमुखाय नमः। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। व्यक्ताव्यक्तनिरोपितं च परमं शत्रुं च तत्त्वादिकं तस्माद् उत्तरतत्त्वमक्षरमिति ध्येयं सदा योगिभिः। ओंकारादिसमस्तमन्त्रजनकं सूक्ष्मादिसूक्ष्मं परं वन्दे पञ्चममीश्वरस्य वदनं कव्यापि तेजोमयम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय ऊर्ध्वाङ्गमुखाय नमः। I will do Lagunyasam. ॐ मतात्मानगं शिवात्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्कासं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदं कमण्डलवक्षसूत्राणां धारिणं शूलपानिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटास्कामद्योदारिणं वृषस्कन्दसमारूढम् उमादेहार्दधारिणं मृतेनाप्लुतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवम् अक्षरमव्ययं सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वैविश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा दुजः सम्यक् तातो ह्यजनमारभेत्। ॐ प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु पादयो विष्णुतिष्ठतु हस्तयो हरतिष्ठतु बाह्वोरिन्द्रतिष्ठतु जठरे अग्नितिष्ठतु हृदये शिवतिष्ठतु कण्ठे वसवतिष्ठन्तु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयो वायुर्तिष्ठतु नयनयो चन्द्रादित्यो तिष्ठेतां कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेतां ललाटे रुद्रा तिष्ठन्तु मूर्ध्यादित्या तिष्ठन्तु शिरसि महादेव तिष्ठतु शिखायां वामदेव तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयो शिवाशङ्करौ तिष्ठेतां सर्वतो वायुर्तिष्ठतु ततो बहिर्सर्वतो निर्ज्वालामाला परिवृततिष्ठत सर्वे संगेषु सर्वा देवता यथास्थानं तिष्ठन्तु मां रक्षन्तु सर्वान् महाजनान् रक्षन्तु। ॐ अग्निर्मे वाचि श्रुतः हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रुतः प्राणः हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रुतः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि
चंद्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि यशो मे श्रोत्रे श्रुताः श्रोत्रगं हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रुताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रुताः शरीरगं हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधि वनस्पतयो मे लोमस श्रुताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि इंद्रो मे बले श्रुतः बलगं हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतं ब्रह्मणि अजन्यो मे मूर्ध्नि श्रुतः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यो श्रुतः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा म आत्मनि श्रुतः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्महात्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राण पुनराकुतमाकात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तत्तिष्ठत् अमृतस्य गोपाः श्रीरुद्राध्याय प्रश्न महामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्ठिप छन्दः संकर्षणमूर्ति स्वरूपो योऽसावादित्य परमपुरुष स एष रुद्रो देवता ओम नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकं श्री सांब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे अभिषेके विनियोगः ओम अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः निरूढवसुमन्दात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ओम अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने निष्काय वषट निरूढवसुबन्धात्मने कवचाय हम ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रय औषधं सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय पठन् भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् आपादालनभस्थलान्तभुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिष्पाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनुषं रुद्रानुवाक्काञ्चपन्नम् ध्यायेद्दीप्सितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रोभिषिञ्चे शिवं ब्रह्माण्डव्याप्तदेहभसितमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कंठे काला कपर्दा कलित शशिकला चण्डकोदण्डहस्ताः प्रयक्षा रुद्राक्षमाला प्रणतभयहरा साम्बवा मूर्तिभेदाः रुद्र श्री रुद्र सूक्त प्रकटित विभव न प्रयच्छन्तु सौख्यम् ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आहुतिभिः सीदसादनम् संच मे मयश्च मे प्रियंच मे अनुगामश्च मे कामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रंच मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगच्च मे द्रविणं यन्ता च मे दत्ता च मे क्षेमच्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महच्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूच्च मे प्रसूक्ष मे क्षीरञ्च मे लयंच मृतंच मे मृतंच मे यक्ष्मंच मे नामयच्च मे जीवातुच्च मे दीर्घायुत्वंच मे नमित्रंच मे अभयंच मे सुगंच मे शयनंच मे सोसाच मे सोदिनंच मे ओम शांति शांति शांति
ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषभे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यां तथे नमः। या तयिषु शिवतमा शिवं बभूवते तनुः शिवा सरव्याया तव तया नो रुद्रमडय। या ते रुद्र शिवा तनु घोरा पापकाशिनीं तया नस्तनुभासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकशीः। यामिषं गिरिसन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहिगं से पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्चा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुं सुमनः असत्। अद्य वोचदधि भक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेगिञ्च सर्वान् जम्पयन् सर्वाश्चयात् धान्यः। असौ यस्ताम्र अरुणवुत बभ्रुस्सु मङ्गलः। ये चेमाघं रुद्र अभितो दिक्षुश्रुता सहस्रसो वैशाखं हेडयीमहे। असव्यो वसर्पधि नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नुदहार्यः। तैनं विश्वा भूतानि सदृष्टमढयातिनः। नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे। अतो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्चदन्वनस्वभयोरात्मिर्योर्ज्यां याश्च ते हस्तैषभपराता भगवोऽवप। अवतत्यतनुस्वगं सहस्राक्षसतेषु ते ऋषीर्यशल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। विध्यन्दनः कपर्दिनां बाणभागं मुत अनेशन्नस्ये सव आभुरस्य निषङ्गतिः। या ते हेतिर्मेरुष्टमहस्ते बभूवते तनुः तयास्मान् भिस्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। नमस्ते अस्त्वायुधाय नः तथाय धृष्णवे। उभाभ्यां तथे नमो बाहभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अतो ये सुदुस्तभारे अस्मन्निदेहितं शम्भवे नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये। नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये। नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिसीमते पतीना पतये। नमो नमो बप्लुसाय विव्याधिनेन्नानां पतये। नमो नमो हरिकेशायोपभीतिने पुष्टानां पतये। नमो नमो भवस्य हेति जगतां पतये। नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये। नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये। नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये। नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये। नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये। नमो नमो उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये। नमो नमः कृत्स्नभीताय दावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये। नमो नमः कक्वाय निषङ्गिने स्तेनानां पतये। नमो नमो निषङ्गिनैषधिमते तस्कराणां पतये। नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये। नमो नमो निचेरवे परिचराय अरण्यानां पतये। नमो नमः सृगाविभ्यो जिगागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये। नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृतानां पतये। नमो नमो उष्णेशिने गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये। नमो नमः ईशुमद्भ्यो धन्भाविभ्यश्च वो नमो नमः तन्भानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमः स्येभ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीने व्यशयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः
सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः अश्वेभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नमः नमाभ्यादिनेभ्यभिविद्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमः गणाभ्यस्त्रिगंहतीभ्यश्च वो नमो नमः गृत्सेभ्यः गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमः व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमः रतेभ्यो अरतेभ्यश्च वो नमो नमः रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमः तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषगृद्भ्यो धन्वगृद्भ्यश्च वो नमो नमः मृगयेभ्यः स्वानिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यः स्वपदिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपते च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च सदधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेरुष्टमाय च इषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमो भूम्याय च अवस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च अपगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्निहाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम च नमः भट्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमः वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आसुसेनाय च सुरथाय च नमः सूराय अवविन्धते च नमो वर्मिने च वरुतिने च नमो भिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमाधन्धव्याय च हनन्याय च नमो कृष्णवे च प्रमृषाय च नमो प्रहिताय च नमो निषङ्गिने च सिद्धिमते च नमः तीक्ष्णे च वेचायुधिने च नमः स्वाहिदाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काठ्याय च नीप्याय च नमः सोद्य सरस्याय च नमो आध्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च अवर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्य च नमः हेद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च हर हर नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्तां चारुणाय च नमः शंगाय च पशुपते च नमः उग्राय च भीमा च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदा च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिषेभ्यो नमस्कार नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शंकर य च मयस्कर नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ नमः ॐ नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमस्तीर्थ्याय च गोल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमः थार्याय आह्लाद्याय च नमः शस्प्याय च वैन्याय च नमः सिकत्याय च प्रभाष्याय च
नमः हिरण्याय च प्रपद्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्ते च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्थल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पां सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः लोप्याय च लप्याय च नमः होर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णसद्याय च नमः पाघुरमानाय च विघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिद च नमो वक्किर्ऋगेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्हत्केभ्यो नमः निर्हतेभ्यो नमः आमि केभ्यः द्रापे अंधसस्पथे दरिद्रन्नीललोहित येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चन ममत् याते रुद्र शिवा तनु शिवा वैश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नामडजीवसे इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा नः समसद्धिपथे चतुष्पथे विश्वं पुष्ठं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रतन्हां मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चञ्चयोश्च मनुराय जय पिता ततश्याम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानवोक्षन्तमुतमानवोक्षितं मानो वदीपितरं मोतमातरं प्रियमानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुष्मान गोषमानाम् अश्वेशरीर्षः वीरान् मानो रुद्रभामितो वदीर् अविस्मन्तो विधेमते आराते गोग्नवुत पौरुषज्ञे चयद्वीराय सं नमस्मेते अस्तु रक्षाक्षनो अदीच देव ब्रूह्यताक्षणः शर्म यच्छद्विवर्हाः स्तुहे श्रुतङ्गर्थसधं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नमग्रम् मुडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्वणक्त परित्वेषस्य धर्मतिरघायोः अवस्थिरामगवद्भ्यस्तनुस्वमेध्वस्तोकाय तनयाय मृडय मेरिष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निदाय कृत्तिं वसान आचरं पिनाकबिभ्रदागहि विकिरिद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृति सहस्राणि सहस्रसो ये रुद्रा अधिभूम्याः तेषागं सहस्रो जने वदन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अदि निग्रीवाशिधिकण्ठाः सर्वा अधः क्षमाक्षरा नीलग्रीवाशिधिकण्ठादिवगं रुद्रा उपसृताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानाम् अधिपतयो विशिखासक्कभर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विपतो जनान् ये पतां पतिरक्षय ऐलभृधायव्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुकावन्तो निषङ्गिनः
एहेतावन्तश्च भूयागुं सच्च दिशो रुद्राविदस्तिरे तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिव्ये सामन्नं वातो वर्षमिस वस्तेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रतीचीर दशोधीचीर दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मडयन्तु ते यं दुष्मो यश्च नो द्वेष्टितं भो जम्बे ददामि त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् 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 मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् यो रुद्राग्नव्योऽप्स्योषधीस्यो रुद्रो विश्वाभुवनावेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु तमुष्टियसु सुदन्भाय विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्षामहेशोः मनसा रुद्रन्नमोऽभिद्धेमसृन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवा विमर्शनः ये ते सहस्रमहिधम्पासा मृत्युमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्यभे स्वाहा मृत्यभे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा वैशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिवों सदाशिवों एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयत्रिंशच्च मे चतुस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्च भिजश्च कृतिश्च सुवश्च मूर्धाश्च व्यश्नियश्च शान्त्यायनश्चान्त्यश्च भावनस्य भुवनश्च आदिपदिश्च ॐ निडादेवहुर्मनुर्यज्ञनी बृहस्पतिरुक्ता मतानि सगं सुसद्भिस्वे देवा सूक्तवाच पृथ्वी
आतिर्मामाहिगंसे मधु मनुष्ये मधु जनुष्ये मधु वक्ष्यामि मधु वदिष्यामि मधुमतिं देवेभ्यो वाचमध्यासगं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मां देवा अवन्तु शोभायै वेतरोऽनुमदन्तु। ओम शांति शांति शांति। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर नमः पार्वती पतये। தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, ஏகம்பத்துரையந்தாய் போற்றி, காவாய் கனகத்திரளே போற்றி, கைலை மலையானே போற்றி போற்றி, அண்ணாமலைக்கு மன்னா போற்றி, கண்ணாரமுதக்கடலே போற்றி போற்றி, சிவாய திருச்சிற்றம்பலம். ஓம் ஜாதவேதசே சுனவாமஹசோ மமராதி யதோ நிதஹாதி வேதஹ சனப்பர்ஷததி துர்கானி விஸ்வ நாவேவ சிந்தும் துரிதாத்யக்னிஹி த்வாம் அக்னிவர்ணாம் தபசா ஜ்வலந்திம் வைரோச்சனிம் கர்மஃபலேஷு ஜுஷ்டாம் दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसितरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्ति विरति दुर्गानि विश्वा ऊश्च पृथ्वी बहुलान भर्वि भवातो काह्यतनयाय शय्यो विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावा दुरितादिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं भोज्यविता तनूनां पृतनाजिदगं सहमानभग्रमग्नगं हुवेम परमा तदस्तात् तनपर्षदि दुर्गानि विश्वाचामध्येवादिधुरिताध्यग्निः रत्नोऽसि कमीद्याद्भरेषु सनाच्चहोत्थान तदत्से स्वाञ्चाग्ने तनुवं विप्रयस्व मभ्यं च सौपघमाय जस्व भवेद्दुष्टमयि निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णोर् अनुसञ्चरेम आकश्य पृष्ठमभि संवसाना वैष्णवी लोकहिगमादयन्ताम्। ॐ कात्यायनाय विद्महे अन्यकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ मेधा देवी जुषमाना न आगात् विश्वाचे भद्र सुमनस्य मानं त्वया जुष्टानुदमाना धुरुक्तान् बृहत्वधेम विदते सुवीराः त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीऋतत्वया त्वया जुष्टच्छित्रं भिन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां मयीन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना उभावा दत्ता पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवीं मेधा सरस्वती सा महां मेधा सुरभिर्दुषताग स्वाहा
आमां भेदासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णां जगति जगम्याम् ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामः मेदां सुप्रतीकाजुषन्तां मयि मेदां मयि प्रजां मह्यग्निस्तेजो दत्तु मयि मेदां मयि प्रजां महेन्द्र इन्द्रियं ददातु मयि मेदां मयि प्रजां मयि सूर्यो व्राजो ददातु। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर नमः पार्वती पतये हर नमः पार्वती पतये। தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, இறைவா போற்றி, ஏகம்பத்துரை எந்தாய் போற்றி, பாகம் பெண்ணுரு ஆனாய் போற்றி, காவாய் கனகத்திரளே போற்றி, கையிலை மலையானே போற்றி போற்றி, அண்ணாமலைக்கு மன்னா போற்றி, கண்ணாரமுத கடலே போற்றி போற்றி. சிவாயம் திருச்சிற்றம்பலம், சிவாயம் திருச்சிற்றம்பலம். அமிர்தாபிஷேகமஸ்து. ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய. அருணபானலிங்கேஸ்வரா, 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 அருணபானலிங்கேஸ்வரா. அன்பு அமைதி ஆனந்தம் அனைத்தையும் அருளும் பானலிங்கம். அன்பு அமைதி ஆனந்தம் அனைத்தையும் அருளும் பானலிங்கம். அருணபானலிங்கேஸ்வரா, அருணபானலிங்கேஸ்வரா, லிங்கேஸ்வரா, அருணபானலிங்கேஸ்வரா. அன்பு அமைதி ஆனந்தம் அனைத்தையும் அருளும் பானலிங்கம். அண்ணாமலையில் அமர்ந்தவராம், அருமை பெருமை உடையவராம். அண்ணாமலையில் அமர்ந்தவராம், அருமை பெருமை உடையவராம். இன்மையில் எம்மை காத்தருளாம், இயல்புடன் ஈசன் எழுந்தருளே. இம்மையில் எம்மை காத்தருள இயல்புடன் ஈசன் எழுந்தருளே. நர்மதை
திருவருளாலே தேர்ந்தலிங்கம் கலிகாலத்திலும் கரை சேர காத்து அருளும் பானலிங்கம். கலிகாலத்திலும் கரை சேர காத்து அருளும் பானலிங்கம் அருண பானலிங்கேஸ்வரா கருணை பானலிங்கேஸ்வரா அருண பானலிங்கேஸ்வரா அருணை பானலிங்கேஸ்வரா அண்ணாந்து காண அருணலிங்கம் அருணகேஸ்வரா பானலிங்கம். அண்ணாந்து காண அருணலிங்கம் அருணேஸ்வர பானலிங்கம் அன்பர்கள் தினம் தினம் பல கோடி பக்தி பரவசமாய் பாடி அன்பர்கள் தினம் தினம் பல கோடி பக்தியில் பரவசமாய் பாடி சித்தத்தில் சித்தத்தில் சிறந்த லிங்கம் பக்தர்கள் புகழ்ந்து போற்றும் லிங்கம். சித்தர்கள் சேத்தத்தில் சிறந்த லிங்கம் பக்தர்கள் போற்றும் பானலிங்கம் அடியார் கூடும் சத்சங்கம் நம்மை அப்பனாய் அருளும் லிங்கம். அடியார் கோடும் சத்சங்கம் நம்மை அருளிங்கம் பக்தியும் சக்தியும் தந்தருள்வாய் முக்தியும் முற்றிலும் தந்தருள்வாய். பக்தியும் சக்தியும் தந்தருள்வாய் முக்தியும் சக்தியும் தந்தருள்வாய் நித்திக்கும் நாமம் சிவநாமம் எத்திடம் புகழ்ந்திட பாடிடுவோம். எத்திக்கும் நாமம் சிவநாமம் எத்திக்கும் புகழ்ந்திட பாடிடுவோம் ஹர ஹர சங்கர மகாதேவா சிவ சிவ சங்கர சதாசிவா. ஹர ஹர சங்கர மகாதேவா சிவ சிவ சங்கர சதாசிவா ஓம் நம சிவாய சிவாய நம 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 அருண பானலிங்கேஸ்வரா கருணை பானலிங்கேஸ்வரா அருண பானலிங்கேஸ்வரா கருணை பானலிங்கேஸ்வரா அன்பு அமைதி ஆனந்தம் அனைத்தையும் அருளும் பானலிங்கம். அன்பு அமைதி ஆனந்தம் அனைத்தையும் அருளும் பானலிங்கம் அருண பானலிங்கேஸ்வரா கருணை பானலிங்கேஸ்வரா அருண பானலிங்கேஸ்வரா கருணை பானலிங்கேஸ்வரா அன்பு அமைதி ஆனந்தம் அனைத்தையும் அருளும் பானலிங்கம். அன்பு அமைதி ஆனந்தம் அனைத்தையும் அருளும் பானலிங்கம் बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय हरि Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Hari Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya.
bolo Namah Shivaya. Bolo bolo sab mil bolo Om Namah Shivaya. Bolo bolo sab mil bolo Namah Shivaya. Bolo bolo sab mil bolo Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Bolo bolo sab mil bolo Namah Shivaya. Bolo bolo sab mil bolo Om Namah Shivaya. झूठ जटा में गंगाधारी झूठ जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजावे त्रिशूलधारी डमरू बजावे त्रिशूलधारी डमरू बजावे त्रिशूलधारी डमरू बजावे डम 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 डमरू बजे डम 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 डमरू बजे गूंज उठा ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो बोलो सबिल बोलो नमः शिवाय बोलो बोलो सबिल बोलो ओम नमः शिवाय 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 झूठ जटा में गंगाधारी झूठ जटा में गंगाधारी झूठ जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजावे त्रिशूलधारी डमरू बजावे त्रिशूलधारी डमरू बजावे डम 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 डमरू बजे बोल डम 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 डमरू बजे डम 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 डमरू बजे गूंज उठाओ नमः शिवाय गूंज उठाओ नमः शिवाय गूंज उठाओ नमः शिवाय गूंज उठाओ नमः शिवाय गूंज उठाओ शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah. Om Namah Shivaya. 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 Shivaya Namah. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om Namah Shivaya, Shivaya Namah. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om Namah Shivaya, Om Shivam. Om Shivam. Om Shivam. Om. Om Shivam, Om Shivam, Om Shivam, Om. Om Shivam. Om Shivam. Om Shivam. Om. Om Shivam. Om Shivam. Om Shivam. Om. Shivaya Namah. Om Namah Shivaya. Shivaya Shivaya. Shiva Shiva Shivaya Shiva Shiva Shivaya Namah. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om Namah Shivaya Om Shivam. Om Shivam. Om Shivam. Om Shivam, Om Om Shivam Shivam, Om Om Shivam Shivam, Om. Shivaya Namah Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Namah Shivaya Shivaya Parameshwaraya Sasisekaraya Namo. Shivaya Parameshwaraya Shashishekaraya Namaho Shivaya Parameshwaraya Sasisekara Namo. Shivaya Parameshwaraya Shashishekaraya Namaho Om Bhavaya Gunasambhavaya Bhavaya Gunasambhavaya Bhavaya Sivakambara Bhavaya Gunasambhavaya Shivatandavaya Namo. Bhavaya Gunasambhavaya Shivatandavaya Namo Shivaya Parameshwaraya Chandrasekharaya Namo. Shivaya Parameshwaraya Chandrasekharaya Namo. Shivaya Parameshwaraya Chandrasekharaya Namo. Shivaya Parameshwaraya Chandrasekharaya Namo Bhavaya Gunasambhavaya Shivatandavaya Namo Bhavaya Gunasambhavaya Shivatandavaya Namo Shivaya Parameshwaraya Shekaraya Namo Shivaya Parameshwaraya Shashishekaraya Namo Bhavaya Gunasambhavaya Shivatandavaya Namo Bhavaya Gunasambhavaya
Shiva 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 Shivaya Namo Om. Shiva 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 Shivaya Namo Om. Bhava 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 Haraya 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 Namo Om. Shivaya Namo Om. 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 Haraya Namo Om. Bhavaya Namo Om. Shivaya Namo Om. Bhavaya Namo Om. Shivaya Namo Om. Shiva 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 Shivaya Namo Om. Shiva 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 Shivaya Namo Om. Hara 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 Haraya Namo Om. Hara 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 Haraya Namo Om. Shiva 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 Shivaya Namo Om. Shiva 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 Shivaya Namo Om. Hara 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 Bhavaya Namo Om. Hara 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 Bhavaya Namo Om. Shivaya Namo Om. Haraya Namo Om. Shivaya Namo Om. Haraya Namo Om. Haraya Namo Om. Bhavaya Namo Om. Haraya Namo Om. Bhavaya Namo Om. Bhavaya Namo Om. Haraya 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 Namo Om Om. Bhavaya Namo Om. Haraya Namo Om. Bhavaya Namo Om. Haraya Namo Om. Om Bhavaya Namo Om. Haraya Namo Om. Bhavaya Hara Om. Haraya Namo Om. Bhavaya Hara Om. Ya Bhavavam. Bhavaya Namo Om. Bhavaya Namo Om. Shivaya Namo Om. Bhavaya Namo Om. Shivaya Namo Om. Bhavaya Namo Om. Shivaya Namo Om. Bhavaya Hara Om. Shiva 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 Shivaya Namo Om. Shiva 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 Shivaya Namo Om. Hara 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 Bhavaya Namo Om. Hara 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 Bhavaya Namo Om. Hara 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 Bhavaya Namo Om. தொல்லையிரும் பிறவி சூழும் தலை நீக்கி அல்லல்லறுத்தியமை ஆனந்தமாக்கியதே எல்லை மறுவா நெறியளிக்கும் வாதவூரங்கோன் திருவாசகம் என்னும் தேன். நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ்வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க. கோகழி ஆண்ட குருமனிதன் தாழ்வாழ்க, ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க. ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க, வேகங்கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவல்க. பிறப்பருக்கும் பிஞ்சகந்தன் பெய்கடல்கள் வல்க, புறத்தார்க்கு சேயோந்தன் பூங்கடல்கள் வல்க. கரம் குவிவார் உள்மைகளும் கோன் கடல்கள் வல்க, சிரம் குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கடல் வல்க. ஈசன் அடி போற்றி, எந்த அடி போற்றி, தேசன் அடி போற்றி, சிவன் சேவடி போற்றி, நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி, மாய பிறப்பருக்கும் மன்னன் அடி போற்றி, சீரார் பெருந்துரை நம் தேசன் அடி போற்றி, ஆராத இன்பம் ஆருளும் மலை போற்றி, சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்றதனால் அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைப்பன் யான். கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்டாட்ட வந்தெய்தி எண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார் கடலிறைஞ்சி விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கொழியாய் என் நிறந்தலை இலாதானே
நின் பெரும் சீர் பொல்லாவினையேன் புகழுமாறொன்றறியேன் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா நின்ற தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்தொழைத்தேன் எம்பெருமான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டென்று வீடுற்றேன் உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யா விமலா விடைப்பாக வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே வெய்யாய் தனியாய் இயமான நாம் விமலா பொய்யாயினையெல்லாம் போயகல வந்தருளி மெய்ஞானமாகி மிளர்கின்ற மெய்ச்சுடரே எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல்லறிவே ஆக்களவு இறுதியில்லாய் அனைத்துலகம் ஆக்குவாய் காப்பாய் அளிப்பாய் அருள் தருவாய் போக்குவாய் என்னை புகுவிப்பாய் நின்றொழும்பில் நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நனியானே மாற்ற மனம் களிர நின்ற மறையோனே கரந்தவால் கண்ணளோடு நெய் கலந்தாற் போல சிறந்த அடியார் சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் நிறங்களோர் ஐந்துடையாய் விண்ணோர்கள் ஏத்த மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை மறைந்திட மூடிய மாய இருளை அறம்பாவம் எனும் அருங்கயிற்றால் கட்டி புறந்தோல் போர்த்தெங்கும் முழு அழுக்கு மூடி மலம் சோறும் 9 வாயில் குடிலை மலங்க புலனைந்தும் வஞ்சனையை செய்ய விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்து அன்பாகி கசிந்துள்ளொருகம் நலந்தான் இல்லாத சிறியேற்கு நல்கி நிலந்தன் மேல் வந்தருளி நீள்கடல்கள் காட்டி ஞாயிற்கடையாய் கிடந்த அடியேற்கு தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனை மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே தேசனே தேனார் அமுதே சிவபுரனே பாசமாம் பற்றறுத்து பாரிக்கும் மாரியனே நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சங்கட பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே ஆரா அமுதே அளவிலா பெம்மானே ஓராதார் உள்ளத்துள் ஒளிக்கும் ஒளியானே நீராய் உருக்கி என் ஆறுயிராய் நின்றானே இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே அன்பரு கண்பனே யாவையுமாம் அல்லையுமாம் சோதியனே துன்னிருளே தோன்றா பெருமையனே ஆதியன அந்தம் நடுவாகி எல்லானே எத்தன்னை ஆட்கொண்ட எந்த பெருமானே கூர்த்தமே ஞானத்தால் கொண்டுணர்வார் தன் கருத்தில் நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே போக்கும் வரவும் உணர்வும் இல்லா புண்ணியனே காக்கும் என் காவலனே காண்பரிய பேரொழியே ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தா அக்காய் நின்ற தோற்ற சுடரொளியாய் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய் மாற்றமாம் வையகத்தில் வெவ்வேறே வந்தறிவான் தேற்றனே தேற்ற தெளிவே என் சிந்தனையுள் ஊற்றான உன்னார் அமுதே உடையானே ஏற்று விகார விடக்கிடம்பின் உட்கிடப்ப ஆற்றேன் எம்மையா அரணே ஓ என்றென்று போற்றி புகழ்ந்திருந்து பொய்கட்டு மெய்யானார் மீட்டிங்கு வந்து வினை பிறவி சாராமே கள்ளப்புலக்குரம்பை கட்டளிக்க வல்லானே நல்லருளில் நட்டம் பயின்றாடு நாதனே தில்லையுள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று சொல்லற்கரியானை சொல்லி திருவடிக்கீழ் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவபுரத்தில் உள்ளார் சிவனடி கீழ் பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவர் செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவனடி கீழ் பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து. ஓம் சிவாய. திருச்சிற்றம்பலம்.
रुद्रत्रिशतिनामावळि पूजां च करिष्ये। ॐ नमो हिरण्यवाहवे नमः। सेनान्ये नमः। दशाञ्चपतये नमः। नमो वृक्षेभ्यो नमः। हरिकेशेभ्यो नमः। शूनापतये नमः। नमः सस्पिञ्जराय नमः। तुषीमते नमः। अथीनां पतये नमः। नमो बभ्रुसाय नमः। दिव्यादिने नमः। नानापतये नमः। हरिकेशाय नमः। उपवीदिने नमः। अष्टानां पतये नमः। नमो भवस्य हेत्यै नमः। जगदां पतये नमः। नमो रुद्राय नमः। आतथाविन्हे नमः। चैत्राणां पतये नमः। सूताय नमः। अहंत्याय नमः। वनानां पतये नमः। नमो रोहिताय नमः। स्थपतये नमः। वृक्षाणां पतये नमः। मन्त्रिणे नमः। वाणिजाय नमः। कक्षानां पतये नमः। नमो भुवन्तये नमः। वारिवस्कृताय नमः। औषधीनां पतये नमः। उच्चैर्घोषाय नमः। आक्रन्तयते नमः। पथीनां पतये नमः। नमः कृत्सवीदाय नमः। धावते नमः। सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय नमः। निर्व्याधिने नमः। आभ्यादिनीनां पतये नमः। ककुपाय नमः। शङ्गिन्हे नमः। सेनानां पतये नमः। मोनिशङ्गिन्हे नमः। विष्णुमते नमः। तस्कराणां पतये नमः। नमो पञ्चते नमः। परिवञ्चते नमः। स्थायूनां पतये नमः। मोनिचेरभे नमः। परिसराय नमः। अरण्यानां पतये नमः। नमस्काभिभ्यो नमः। जिगागुंसद्भ्यो नमः। मुष्टतां पतये नमः। नमो श्रीमद्भ्यो नमः। नक्षत्रभ्यो नमः। प्रकृन्तानां पतये नमः। नमो उष्णीषिणे नमः। गिरिचराय नमः। कुलुञ्चानां पतये नमः। विषमद्भ्यो नमः। दान्वाभिभ्यश्च नमः। वो नमः। नमः आदन्वानेभ्यो नमः। प्रतिददानेभ्यश्च नमः। ओ नमः। नमः यच्छद्भ्यो नमः। सुतभ्यश्च नमः। वो नमः। नमो सभ्यो नमः। अच्छेभ्यो नमः। नमो सभ्यो नमः। विद्येभ्यश्च नमः। वो नमः। नमः आसीनेभ्यो नमः। शयानेभ्यश्च नमः। ओ नमः। नमः स्वपद्भ्यो नमः। जाग्रत्यश्च वो नमः। जाग्रद्भ्यश्च नमः। ओ नमः। नमः तिष्ठद्भ्यो नमः। गावत्यश्च नमः। वो नमः। नमः सभाभ्यो नमः। भापतिभ्यश्च नमः। ओ नमः। नमो श्वेभ्यो नमः। अर्षपतिभ्यश्च नमः। वो नमः। नमः आभ्यादिनीभ्यो नमः। विद्यन्तीभ्यश्च नमः। ओ नमः। मोगनाभ्यो नमः। द्रुहं कृतिभ्यश्च नमः। वो नमः। नमो कृत्सेभ्यो नमः। उत्सवदिभ्यश्च नमः। ओ नमः। नमो भ्रातेभ्यो नमः। राधपतिभ्यश्च नमः। वो नमः। नमो गणेभ्यो नमः। गणपतिभ्यश्च नमः। ओ नमः। नमो विरूपेभ्यो नमः। स्वरूपिभ्यश्च नमः। वो नमः। नमो महद्भ्यो नमः। शुल्लकेभ्यश्च नमः। ओ नमः। नमो रतिभ्यो नमः। रतिभ्यो नमः। अरधेभ्यश्च नमः। ओ नमः। नमो रथेभ्यो नमः। रतपतिभ्यश्च नमः। ओ नमः। नमः सेनाभ्यो नमः। सेनानिभ्यश्च नमः। ओ नमः। नमः शत्रुभ्यो नमः। इन्द्रहेतृभ्यश्च नमः। ओ नमः। नमः तिष्ठद्भ्यो नमः। गदकारेभ्यश्च नमः। ओ नमः। तावद्भ्यश्च नमः। नमः कुलालेभ्यो नमः। कर्मारेभ्यश्च नमः। ओ नमः। नमः पुञ्जिष्ठेभ्यो नमः। विषादेभ्यश्च नमः। ओ नमः। नमः ईशुभ्यो नमः। धन्वनिभ्यश्च नमः। ओ नमः। नमो मृगयिभ्यो नमः। स्वनिभ्यश्च नमः। ओ नमः। नमः स्वभ्यो नमः। भवाय च नमः। रुद्राय च नमः। नमो सर्वाय च नमः। पशुपतये च नमः। नमो नीलग्रीवाय च नमः। सिद्धिकण्ठाय च नमः। कपर्दिने च नमः। गुप्तकेशाय च नमः। नमो सहस्राक्षाय च नमः। दन्वने च नमः। नमो गिरिशाय च नमः। शिविष्टाय च नमः। नमो मीरिष्टमाय च नमः। पशुपते नमः। नमो ह्रस्वाय च नमः। वामनाय च नमः। नमो बृहते च नमः। वर्षीसे नमः। नमो वृद्धाय च नमः। संपृत्पदे च नमः। अग्र्याय च नमः। प्रथमाय च नमः। आशवे च नमः। अचिराय च नमः। शीघ्र्याय च नमः। सीप्याय च नमः। नमो होर्व्याय च नमः। वसन्याय च नमः। नमो स्रोतस्याय च नमः। दीप्याय च नमः। नमो ज्येष्ठाय च नमः। कनिष्ठाय च नमः। पूर्वजाय च नमः। अपराजय च नमः। ध्वजाय च नमः। नमो मध्यमाय च नमः। अपकल्प्याय च नमः। जगन्याय च नमः।
Nityaaya Namaः, Shobhyaya Namaः, Tisaryaaya Namaः, Yamyaya Namaः, Shemyaaya Namaः, Urvadyaya Namaः, Kalyaaya Namaः, Shlokyaya Namaः, Avasanyaya Namaः, Bhavanyaya Namaः, Kashyaya Namaः, Masravaya Namaः, Madhishtavaya Namaः, Mahasenaya Namaः, Asuradaya Namaः, Suraya Namaः, Abhintade Namaः, Varmine Namaः, Rudine Namaः, Vilmine Namaः, Vachine Namaः, Utaya Namaः, Shutasenaya Namaः, Madhandivyaya Namaः, Ahadanyaya Namaः, Vishnave Namaः, Brahmusaya Namaः, Bhutaya Namaः, Rahitaya Namaः, Sangine Namaः, Shuddhine Namaः, Siddhimate Namaः, Tishteshve Shrekshejave Namaः, Vaidaya Namaः, Vaidaya Namaः, Tanvare Namaः, Sutyaya Namaः, Katyaya Namaः, Katyaya Namaः, Devyaya Namaः, Sudyaya Namaः, Sarasya Namaः, Nadhyaya Namaः, Vaisantaya Namaः, Gopyaya Namaः, Amadhyaya Namaः, Vavarshaya Namaः, Namasyaya Namaः, Meghyaya Namaः, Vidyaya Namaः, Nidriyaya Namaः, Madhuryaya Namaः, Vatyaya Namaः, Reshmyaya Namaः, Vastavyaya Namaः, Vastubhaya Namaः, Hara Namaः Somaya Namaः, Rudraya Namaः, Tamraya Namaः, Arunaya Namaः, Shangaya Namaः, Vasudeye Namaः, Agraya Namaः, Bhimaya Namaः, Agrevadaya Namaः, Devadaya Namaः, Mantre Namaः, Aniyache Namaः, Vrikshebhyo Namaः, Arikesebhyo Namaः, Namaskaraయ Namaः, Namasambhave Namaः, Mayhobhave Namaः, Namasankaraya Namaः, Mayaskaraya Namaः, Namasivaya Namaः, Shivataraya Namaः, Musthityaya Namaः, Kulyaya Namaः, Varyaya Namaः, Avaryaya Namaः, Putranaya Namaः, Putranaya Namaः, Adharyaya Namaः, Aradhyaya Namaः, Saspyaya Namaः, Devyaya Namaः, Rasigatyaya Namaः, Navahyaya Namaः, Hiranyaya Namaः, Namadhyaya Namaः, Higamshalaya Namaः, Jayanaya Namaः, Vardhine Namaः, Purasteye Namaः, Goshyaya Namaः, Girhyaya Namaः, Talpyaya Namaः, Girhyaya Namaः, Katyaya Namaः, Kakvareshthaya Namaः, Om Namo Hridayaya Namaः, Niveshebhyaya Namaः, Niveshpyaya Namaः, Mahumsabhyaya Namaः, Rajasyaya Namaः, Namashuchaya Namaः, Harityaya Namaः, Namo Lopyaya Namaः, Ulapyaya Namaः, Bhupyaya Namaः, Namasurmyaya Namaः, Namo Panyaya Namaः, Arnasadhyaya Namaः, Namo Pakarmana Namaः, Nama Bhignate Namaः, Akhitate Namaः, Prakhyate Namaः, O Namaः, Namo Pirikirikebhyo Namaः, Devanahumudayebhyo Namo Namaः, Vikshenagebhyo Namaः, Namo Shidvatkebhyo Namaः, Namo Nirhatebhyo Namaः, Amivadkebhyo केभ्यो नमः द्राभे अंधसस्पधे दरिद्रन्नीललोहितं येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभिर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् शिव अष्टोत्तरनामावळि पूजां च करिष्ये ओम शिवाय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम शंभवे नमः ओम पिनाकिने नमः ओम शशिशेखराय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम विरूपाक्षाय नमः ओम कपद्दिने नमः ओम नीललोहिताय नमः ओम शंकराय नमः ओम शूलपाणये नमः ओम Katvargine Namaः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः ओम Shrivishtaya Namaः, अंबिकानाथाय नमः Om Shrikanthaya Namaः, Om भक्तवत्सलाय नमः ओम भवाय नमः Om Sarvaya Namaः, ओम त्रिलोकेशाय नमः Om Shrikanthaya ओम Namaः, शिवाप्रियाय नमः Om Ugraya Namaः, कपालिने नमः Om कामारये नमः ओम अंधकासुरसूदनाय नमः ओम गंगाधराय नमः ललाटाक्षाय नमः कालकालाय नमः कृपानिधये नमः Bhimaya Namaः, ओम परशुहस्ताय नमः Mrgapaniye Namaः, जटाधराय नमः Om कैलासवासिने नमः Om Kavachine Namaः, कठोराय नमः Om Tripurantakaya ओम Namaः, वृषांकाय नमः Vrishabhadruhaya वृषभारूढ़ाय नमः ओम भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः सामप्रियाय नमः ओम स्वरमयाय नमः ओम त्रैमूर्तये नमः ओम अनीश्वराय नमः ओम सर्वज्ञाय नमः ओम परमात्मने नमः ओम सोमसूर्याग्निलोक्षणाय नमः ओम हविषे नमः ओम यज्ञमयाय नमः ओम सोमाय नमः ओम पंचवक्त्राय नमः ओम सदाशिवाय नमः ओम विश्वेश्वराय नमः ओम वीरभद्राय नमः ओम गणनाथाय नमः ओम प्रजापते नमः ओम हिरण्यरेतसे नमः ओम दुर्दर्शाय नमः ओम गिरीशाय नमः ओम गिरीशाय नमः ओम अनघाय नमः ओम भुजंगभूषणाय नमः ओम वर्गाय नमः ओम गिरिधन्वने नमः ओम गिरिप्रियाय नमः Om Kirtivasave Namaः, पुराराते नमः भगवते नमः प्रमदाधिपाय नमः मृत्युंजयाय नमः ओम सूक्ष्मतनवे नमः जगद्व्यापिने नमः ओम जगद्गुरवे नमः ओम व्योमकेशाय नमः ओम महासेनजनकाय नमः चारुविक्रमाय नमः रुद्राय नमः भूतपतये नमः ओम स्थानवे नमः ओम हिर्बुद्ध्याय नमः ओम दिगंबराय नमः ओम अष्टमूर्तये नमः ओम अनेकात्मने नमः ओम सात्विकाय नमः ओम शुद्ध विग्रहाय नमः ओम शाश्वताय नमः
ओम कंडपरशवे नमः। ओम अजाय नमः। ओम पाशविमोचकाय नमः। ओम मृडाय नमः। ओम पशुपतये नमः। ओम देवाय नमः। महादेवाय नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम हरये नमः। ओम भगनेत्रिविदे नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम दशत्वरहराय नमः। ओम हराय नमः। पूषदंडविदे नमः। अव्यग्राय नमः। सहस्राक्षाय नमः। सहस्रपदे नमः। अपवर्गप्रदाय नमः। अनंताय नमः। तारकाय नमः। सांब सदाशिव परमेश्वर स्वामिने नमो नमः। அப்பா போற்றி, அரணே போற்றி, என்னை போற்றி, எழுத்தே போற்றி, என்குணா போற்றி, உருவா போற்றி, ஒப்பிலா போற்றி, ஓங்காரா போற்றி, சடையா போற்றி, சங்கரா போற்றி, சதுரா போற்றி, பொன்னே போற்றி, பொருளே போற்றி, மண்ணே போற்றி, மணியே போற்றி, மணாலா போற்றி, மஞ்சா போற்றி, குறியே போற்றி, குணமே போற்றி, கூத்தா போற்றி, குன்றே போற்றி, தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. ஓம் தசாங்கம் ககுலம் தூபம் சுகந்தம் ச ஸ்மனோஹரம் கபிலாகர சம்யுக்தம் தூபோயம் பிரதிகృహ్యతం. ஓம் தூர்சி தூர்ஹம் தூர்வந்தம் தூர்வதம் யோஸ்மான் தூர்வதிதம் தூர்பயம் வயம் தூர்வாமஸ்தும் தேவானாமசி தஸ்மிதமம் பப்ரிதமம் துஷ்டதமம் வன்னிதமம் தேவஹூதம் ஆவர்த்தமசி அவிர்தானகம் ஹ்ரஸ்வம். ஓம் धूपमाग्रापयामि रसांगं गुग्लं धूपं सुगन्धं च सुमनोहरं विलाहरसंयुक्तं धूपोऽयं मदीयता दूरशिरोर्भं दूर्वन्तं दूर्वथं योऽस्मान् दूर्वते तं दूर्भयं वयं दूर्वामस्त्वं देवानामसि तस्निधमं वप्रिधमं दुष्टतमं वह्नितमं देवभूतमहोतमसि अविर्धानगं ह्रस्वम्. प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि उद्दीप्यस्य जातवेदो अपघ्नन्नररतिं मम पशुगश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिश मानोहगिंस्य जातवेदो गामस्वं पुरुषं जगत् अभिभ्रदग्नाजिः श्रियामां परिपातयाम्. ॐ पर्याप्त्यानन्तरायाय सर्वस्तोमोऽस्ति राष्ट्रमुत्तमं महर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति 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 अङ्ग्रहण्येत्यायजते इमां जनतागं सङ्गृह्णानीति द्वादशरसनारसनी भवति द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वये मुञ्जाः ऊर्ध्वमेवावरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वायेतत् कर्म यदस्वमेध समृद्धि. धूपदीपानन्दरमाचमनीं समर्पयामि. ॐ मधुभातारुतायते मधुक्षरन्ति सन्दवः मध्वीनः सन्तोषधिः मधुनक्तमुषोषसि मधुमत्पार्थिवघं रजः मधुर्जौरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पति मधुमागमस्तु सूर्यः मद्भिर्गावो भवन्तु नः मधु 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 सर्वं मधुत्वम्. ॐ भुजगेश्वर स्वामिने नमो नमः. भूर्भुवस्वच्छुधर्मर्गदेवस्तिमिति योजन प्रचोदयात् देवस्सवित प्रसुवहम्. सत्यं दोर्तेन परिसिञ्चामि मृतोपस्तरणमस्तु मृतोपस्तरणमसि
स्वाहा नानाविध महानैवेद्यानि निवेदयामि नानाविध महानैवेद्यानि निवेदयामि तत्प्रक्षालनं समर्पयामि पादप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि पुरापोषणं समर्पयामि मध्ये मृतपानीयं समर्पयामि मध्ये मृतपानीयं समर्पयामि कर्पूरनीराजनं दर्शयामि ॐ नीराजनं समाङ्गल्यं सूर्यकोटिसमप्रभम् अहं भक्त्या प्रदास्यामि श्रीकृष्णदयानिधे न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति तस्मै पञ्चमगं होद प्रत्यशृणोत प्रपञ्चहोतो भवत् पञ्चहोतो हवैरामेशः संवाहेतं पञ्चहोतधुं पञ्चभूतेत्याधक्षते परोक्षेण परोक्षप्रियाय हि देवाः आत्मन्नात्मन् नित्या मन्त्रयत तस्मै षष्ठमगं होत प्रत्यशृणोत षड्भूतो भवत् षड्भूतो हवैनामेशः संवाहेतं षड्भूतधुंसन्तं षड्भूतेत्याधक्षते परोक्षेण परोक्षप्रियाय हि देवा आत्मन् नित्यामन्त्रयत नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठ मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो नमः ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ॐ यपं पुष्पं वेद इन्द्रमावापं पुष्पं यज्ञेवं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनं योऽग्निरायतनं वेद आपो वा अग्नेरायतनम् एवं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् यो वायुरायतनं वेद आपो वै वायुरायतनम् एवं वेद
आयतनवान् भवति असौ वै तपन् अपामायतनम् यामुष्य तपतायतनं वेद आपो वा अमुष्य तपतायतनम् य एवं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् यश्चन्द्रमसः आयतनं वेद आपो वै चन्द्रमसः आयतनम् य एवं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनम् य एवं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् य एवं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् यत्संवत्सरस्यायतनं वेद आपो वै संवत्सरस्यायतनम् य एवं वेद योऽप्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय सम्मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः वेदोयुक्त मंत्र पुष्पं समर्पयामि प्लीज ऑफर योर फ्लावर्स ओम ऋषिगणवंदित स्वामिने नमः ऋग्वेद प्रियः ऋग्वेदमोदारयाम् ॐ अग्निमीहिले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होताहारं रत्नदातमं हरिः ॐ यज्ञरक्षक स्वामिने यजुर्वेद प्रियः यजुर्वेदमोदारयाम् इषेकोचपावाय वक्तो भावस्तदेवो वस्सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे हरिः ॐ ॐ साम्ब सदाशिवपरमेश्वर स्वामिने नमो नमः सामगानप्रियः सामगानमवदारयाम् आज्ञायाहि पीतये गृणानो हव्यदातये निहोत सत्सि बर्हिषि हरिः ॐ ओम आगमरक्षक स्वामिने अथर्वणवेदप्रियः अथर्वणवेदमवदारयाम् सन्नो देवीरभिस्तय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः हरिः ॐ ओम न कर्मणा न प्रजया ॐ न कर्मणा न प्रजया तनेन त्यागेन ये अमृतत्वमानशो हरेण नाकं निहितं गुहायां ते प्राचते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थ संन्यासयोगयतयः शुद्धसत्पाः ते ब्रह्मलोके तु पराहन्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेहेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमद्य साकस्थं तत्रापि दारं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस महेश्वरः हरिः ओम ओम ज्ञान संबंधವಾಗಿ ಸಾಲಾಳ ಸುಂದರ ಮಣಿವಾಚಕಾದಿಗೆ ಮಾನಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಿಯ ದೇವಹಾರ ಮೋದಾರಯಾಮ್ Sochunai Vediyan
சோதிவானவன் ஒற்றுனை திருந்தாரி பொருந்த கை தோல சொற்றுனை வேதியன் சோதிவானவன் ஒற்றுனை திருந்தாரி பொருந்த கை தொழ கற்று கற்றுனை பூட்டியோர் கடலில் பாய்ச்சினம் கற்றுனை பூட்டியோர் கடலில் பாய்ச்சினும் நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே. அண்ணல்லே என ஆண்டு கொண்டருளிய அமுதே விண்ணிலே மறைந்து அருள் புரி வேத நாயகனே கண்ணினால் திருக்கையிலையில் இருந்த நின் கோலம் நன்னி நான் தொழ மகிழ்ந்தருள் புரியன பணிந்தவர் வேத நெறி தழைத்தோங்க மிகு சைவத்துறை விளங்க வேத நெறி தழைத்தோங்க மிகு சைவத்துறை விளங்க பூத பரம்பரை பொலிய புனிதவாய் மலர்ந்தாழுத சீதவள வயற்புகலி திருஞான சம்பந்தர் பாதமலர் தலை கொண்டு திருத்தொண்டு பரவுமாம் வாழ்க அந்தன்னர் வனவர் ஆனினும் வாழ்க அந்தன்னர் வனவர் ஆனினும் வீழ்க தன்புணல் வெந்தனும் வாங்குக ஆழ்க தீயதெல்லாம் அரண் நாமமே சூழ்க மையகமும் துயர் தீர்கவே. வான்முகில் விழாது பெய்க மலிகளம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாது இருள் வாழ்க நான் மறையரங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் ஆறிரு தடந்தோள் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெப்பை ஆறிரு தடந்தோள் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெப்பை ஆறிரு தடந்தோள் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெப்பை கோரிசை தனிவேல் வாழ்க கொக்குடம் வாழ்க கோரிசை தனிவேல் வாழ்க கொக்குடம் வாழ்க ஏரிய மங்கை வாழ்க யானை அணங்கு வாழ்க ஏரிய மங்கை வாழ்க யானை அணங்கு வாழ்க மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியார் மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியார். ஹரஹர நம பார்வதீபதே மகாதேவ என்னாருடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் தேவா போற்றி ஏகம் முத்துரை என்றாய் போற்றி வாகம் பெண் உருவானாய் போற்றி காவாய் கனகத்திரளே போற்றி கையிலை மலையானே போற்றி போற்றி அண்ணாமலைக்கு மன்னா போற்றி அண்ணாரமுத கடலே போற்றி போற்றி சிவாய திருச்சிற்றம்பலம். தேவதேவோத்தம தேவதா சர்வபௌமகிலாண்டகோடி பிரம்மாண்ட நாயக ஸ்ரீ விஜய் பவ கர்நாடக சங்கீத பிரிய கர்நாடக சங்கீத மோதாரய. சிதம்பரனை திகம்பரனை சிதம்பரனை திகம்பரனை கங்காதரனை ஹரனை நினை மனமே சிதம்பரனை திகம்பரனை கங்காதரனை ஹரனை நினை மனமே மதனை எரித்தவனை சூலனை மதனை எரித்தவனை சூலனை காலனை காலால் உதித்தவனை குளிர்மதிநாதனை சிதம்பரனை
மதனை எரித்தவனை சூலனை காலனை காலால் உதைத்தவனை குளிர்மதிநாதனை சிதம்பரனை திகம்பரனை கங்காதரனை அரணை நினை மனமே அரவு அணிந்தவனை அம்புலி பூண்டவனை அரவு அணிந்தவனை அம்புலி பூண்டவனை துறவு மாமன்னனை துரியும் கடந்தவனை துறவு மன்னனை துரியும் கடந்தவனை மறைக்குள் இருப்பவனை ஆ ஆ மறைக்குள் இருப்பவனை மறைப்பொருளானவனை மறைக்குள் இருப்பவனை மறைப்பொருளானவனை இறைவனை பரமனை பரமாகி நின்றவனை இறைவனை பரமனை பரமாகி நின்றவனை சிதம்பரனை திகம்பரனை சிதம்பரனை திகம்பரனை கங்காதரனை அரணை நினை மனமே நினை மனமே நினை மனமே. देवदेवोत्तम देवता सर्वभौम श्री विजयी भव। स्वस्ति वातप्रियः स्वस्ति मंत्रोदारय। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्रह्मणः सन्तु निर्भयाः। हरिः ओम्। ओम स्वस्ति मंत्रार्था सत्या सबला सन्ति दिवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु। देवदेवोत्तम देवता सर्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक श्री विजयी भव। सृष्टि श्री संहार तिरोधन अनुग्रह पंचकृत्य परायणस्य अत्र विराजितमान भुजगेश्वर स्वामिनस्य अद्य अनुष्ठितमान भानुवासर प्रातःकाल रुद्राभिषेक आराधना रुद्र त्रिशति शिव स्तोत्र शतनामावली पूजा मध्ये संकल्प प्रवृद्धि एतक्षण पर्यन्तं संभावित समस्त मंत्रलोपे तंत्रलोपे क्रियालोपे नैवेद्यादिलिखितलोपे सर्वं शास्त्र अनुष्ठितं भूयात् इति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु। तथास्तु। देवदेवोत्तम देवता सर्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक श्री विजयी भव। तत्र आगतमान अनागतमान यजमानस्य सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य समस्त संकट निवारण सिद्धिरस्तु इति भवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु। तथास्तु। देवदेवोत्तम देवता सर्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक श्री विजयी भव। रागतमान अनागतमान समस्त यजमानस्य च परिवारस्य सकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्यविद्युजायुः आरोग्य अभिवृद्धि सिद्धिरस्तु। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ प्राप्ति सिद्धिरस्तु। समस्त सन्मंगलानि सन्तु इति भवन्तु
महान्तो अनुगृह्णन्तु तथास्तु। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक श्री विजयी भव। अत्र आगतमान यजमान्याः नैत्रपकाश्रगोत्रोद्भवायाः अनुराधा नक्षत्र वृश्चिकराशौ जातायाः दानव्या दुरै स्वामी नाम्नेः सरस्वती कटाक्ष अनुग्रहेण संगीत क्षेत्रे कलाक्षेत्रे अति उन्नत प्राप्ति सिद्धिरस्तु इति भवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु। विश्वविद्यालये समस्त परीक्षासु उच्च श्रेणी विजयी प्राप्ति सिद्धिरस्तु इति भवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु। शीघ्रेण मनोवांछित चिंतित फल प्राप्ति सिद्धिरस्तु इति भवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु। तथास्तु। देवदेवोत्तम सर्व देवता सर्वमखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक श्री विजयी भव। आगतमान अनागतमान समस्त यजमानस्य परिवारस्य शरीरे वर्तिष्य वर्तमानस्य समस्त रोगादि निवारण सिद्धिरस्तु। संपूर्ण आरोग्यायुः प्राप्ति सिद्धिरस्तु इति भवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु। तथास्तु। सत्याहेषा आशिषः सन्तु। तथास्तु। धर्मोत्तरोत्तर अभिवृद्धि सिद्धिरस्तु। तथास्तु। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे अन्यथा चरणं नास्ति त्वमेव शरणं तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष भुजगेश्वर। साष्टांग नमस्कारान् पंचांग नमस्कारान् समर्पयामि। भुजगेश्वर स्वामिने नमो नमः। ॐ ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एकविल्वं शिवार्पणम् एकविल्वं शिवार्पणम् एकविल्वं शिवार्पणम् एकविल्वं शिवार्पणम् एकविल्वं शिवार्पणम् एकविल्वं शिवार्पणम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय Om Namah Shivaya. Oh, we have, as I mentioned, Ananya doesn't come here that often, so we are lucky this time. She came, and also she has a couple of days. So we're going to have her say a couple of words. She didn't want to, but I asked her that she should say something. Okay, there she is, like a Shiva Param, she has vibhuti nicely on her forehead. That's how it should be, all the girls should put vibhuti on their forehead, very nicely, sing devotional songs for Shiva. Go ahead, Ananya. I feel like that's the prayers I know how to do privately, without the gaze of anyone. But as someone who, I guess, in recent years I've been performing, that's what I do now, publicly and professionally, is what I do is I perform. I'm beginning to try and understand, I think, what my parents and others ask. They say it's not about just singing by yourself, but it's you pray with everyone, for everyone, and the gaze shouldn't matter. What should matter is just only happiness. God bless you. And the labor that goes into making everything as available as possible is a great wisdom. So that's the place that I'm trying to negotiate right now. Of doesn't matter what circumstance it is, to only remember that
prayer is the water that runs underneath everything and makes everything possible. And I think especially because when I walked out to use the restroom, I looked back at the pool and then asked myself if I remembered where I grew up, if this is where the trampoline used to be. And there was this memory of thinking that the state of mind that comes when you're a child playing, and the state of mind I think that comes with praying. If on the luckiest days and on the best of days, I remember that it feels like the same. So it feels very strangely apt that the exact place where I used to feel relief from the pressures of gravity is where also once again I get to come. I get to sing with my father. I get to just try and sing, and I observe myself even while we're singing, thinking, oh, maybe within the next second we should have a new song. I should find a different way for us to sing our voices, for our voices to work together. And then I think every other sentence, it's just a good remembrance for me to remember that it's the only thing that matters is, for as long as you feel like there's the right amount of breath and the right amount of God in between the sentences, how the voice comes out doesn't really matter. So it's that's the only thing that's coming. So at least in beautiful, English. Dhanavya. Most of you online who are attending today and who most of you used to attend my satsang since 2016 and 17, both in person and online, you may have heard me many times repeat one particular Advaitic line, that I am you I am you with a different upbringing and environment. That line comes from Ganavi. So even as a very young teenager, she had that concept that you're all one, Absolute Advaita Vedanta. I am you. That's it. So what makes a difference is what we call upadhis in the Vedantic parlance. It's called upadhi, that you put on, but essentially you're one. But the different dresses that you put on is what you makes different. And where do the different dresses come from? Like Anavya said in her profile message, that upadhis come from your upbringing and environment. I am you. What a statement, huh? With a different upbringing and environment. Beautiful, beautiful. So glad to see her today. Like you said, brings back so many memories. Lovely. Thank you, Ganavya. So, Swamini, Ganavya speaks, Swamini has to speak. So, go ahead. But keep it short. When both speak, we have to be silent. When both speak, we have to be silent. Yeah. Thank you, Ganavya. I'm so happy that you're here today. I was just I have a picture of you and your brother in the pool when you were very small, and I was just looking for that picture, but I think I've put it somewhere safe, and now I can't remember what that safe place is. But it's very safe in my mind and in my heart. And but I wanted to show it to everyone so they could see you, because it's an amazing underwater photo of you and Vignesh when you used to live in the pool. So I'm so happy that you're here today, and thank you for gracing this place with your beautiful voice. I went outside to put the tirtham water outside, and we have speakers outside to play the chants for the Rudraksha trees and the Shiva lingas out there. And the Rudraksha tree, I think must be 120 feet tall now. And that tree was your parents brought that tree when you were just little, very small. I can't remember how old you were, but that tree grows now 120 feet tall, and now you're singing your songs today. The speaker was on to that tree, and it was just very moving.
for me, for both trees on both sides. I mean, that's what makes this place so special, is that it has Banalingam in between two Rudraksha trees. And that it just creates its own energy, its own atmosphere. And then for your beautiful singing, divine singing. Oh, Shiva. Yes. Yes, we used to have we had a rescue dog here, Shiva. Very close to Shiva, right? That was so funny. But Shiva ate a copy of BKS Iyengar's Light on Yoga, which was not very good, and Vignesh's Toothbrush, which was even worse, I think. But anyway, it's so good to have you back here. Shiva is rescue God, Shiva is rescue God. Yes. So I have a picture where we were talking, Ganavi and I are talking, and Shiva is there as part of the conversation, just another kid, wanting to play and be part of it all. And so, it just it occurs to me, like recently I saw a billboard with your name on it in Central Park, New York, and it's like, New York, New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. Yes. It's up to you, New York, New York. And I'm thinking, this little girl who used to swim between my legs. I used to have to be the tower, and then she and her brother would have to swim through, and that was our pool games. And now she's singing in movies. I don't know if she wants me to say all that, but probably not. But she's quite famous, and we don't give her enough credit for who she really is. We don't give her enough credit. We're not sure how much she wants us to tell, but she doesn't want anybody. She doesn't want us anybody. But you should know. You should know, and one day you will all know. That she has an amazing voice, and she has an amazing body of work that she's bringing forth into the world, which a lot of it I don't understand, but it moves me at some level, not just because I love her, but just because even if I didn't know her, I would be deeply moved by it. So please watch out for her name, because she has a very unique name. She's named the one who Swami Dayananda Saraswati said that her name is the one who weaves music, and that's what she's doing. And the world is a better place for it. So God bless you with everything that you do. Thank you for being here today, and blessing us with your beautiful voice and your presence and your divine presence. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayanaya, Om Sri Matre Namaha. Om Namah Shivaya. So that completes our service. So I'm going to play what we promised you, Adi Shankara's Tattva Bodham, part number 6. So I'll play it. That's about a 44-minute video. So please don't miss that. So it comes right now. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Natva jnana pradham gurum mumukshunam hita. You can repeat after me. Om Vasudevendra Yogindram Natva jnana pradham gurum mumukshunam hitarthaya tattvabodho vidhiyate. Panchapranaha. So Panchapranadeha, Adi Shankaracharya in Tattva Bodham doesn't really explain in detail what Panchapranas, but we will spend a few minutes understanding what are the Panchapranas. He just says Panchapranadeha. What is prana in the first place? How the Shastras define it?
Sharira Antaha Sanchari Vayuhu Pranaha, the air, that Vayu that circulates in the body. Sharira Antaha Sancharihi, that Vayu in the form of energy that's circulating in the body is called prana. So why we call that prana? Because prana vayu, oxygen. So you breathe in, the oxygens get absorbed, then they get transported through the blood to the cells, then the glucose is transported, energy takes place. So that is how from the vayu energy is supplied. So the vayu that is circulating in the body, going through the blood supply, the form of transporting glucose, so supplying energy, is called prana. And this prana is divided into 5 categories. So one is prana itself, which is called the outward flow of energy. Prag gamanavan vayuhu pranaha. So that is why in yoga they call it pranayama. Pranayama means not breathing exercise. Pranayama means, yama means to regulate, to bring it in, to do it in a certain way, to order, regulate. To regulating the prana, the flow of energy in your body is called pranayama. Pranayama literally means you regulate the flow of energy in the body through breathing. That's what pranayama means. Yama means regulate. First category is prana, outward flow of energy. Apana is whatever is the downward flow from the navel. Navel is the central point. The umbilicus, navel, is the central point. Ado gamanavan vayuhu apanaha, that flows downward, is apana. And vyanaha, it is that vayu, that energy that permeates all over your body, is called vyana. Vyapakavan vayuhu vyanaha. Udanaha, upward from the navel, when you yawn, belch, and finally when you depart from this body, through the Sahasrara chakra, if you do, that'll be great. So finally when you depart from the body, so all this upward flow, it's called Udgamanavan Vayuhu Udanaha. Samana is a balancing energy that helps you to digest. Prana Apana Samayuktaha Pachamyannam Chaturvidam, Bhagavad Gita. So the Samana is that balancing energy that helps you digest. So these are the Pancha Pranas. So Pancha Jnanendriyas, Pancha Karmendriyas, Pancha Pranas, then mind and the body. Manashchaikam buddhi chaika evam saptadasha kalabhihi. What is mind? Mind is a seat of emotions, perceptions, volition that your mind decides to do. What is intellect? Discrimination, analysis, decision making. That is the wise man sitting behind you telling you, don't do this, do this. And then the mind listen, doesn't do so. So we'll talk about this in detail because Adi Shankaracharya describes the mind and intellect later on in some of the sections. And so all these Saptadasha, 17, Kalavihi, 17 components make what is called the Sukshma Sariram. Remind you, Atma is not the Sukshma Sariram. So he is spending all this time to tell you that this is not what you are. But then he is telling you, why is he wasting so much time in describing something that is not Atma? Very simple reason, because we are familiar with this. We know the body, we know the subtle, the Sukma Sariras, we know smelling, we know sense of touch. So he is trying to explain to us through something that we know, by telling us this is not what it is. They're bringing home the example, telling us through something that we know, and then taking us away from all this, ultimately connecting us with that Parabrahman. This is what you are. So all of a sudden, Adi Shankaracharya cannot say that, oh, Atma is not the sun, Atma is not the moon. I don't know what the moon is, I don't know what the sun is, I don't know what the galaxy is, but I know what my hand is, I know what my feet is. So that is such a beauty of Adi Shankaracharya, by telling us, by teaching us through something that we know. So we know all this Saptadasha Kala Abhihi. And then Karana Shariram. Let me see how much time we have. See how many more slides. Okay.
We'll quickly finish this, if you don't mind. Are you all okay with this? Another 5-10 minutes? Huh? I'm okay, Swamiji. Okay, great. So, the Sukma Shariram was made of the 5 Karmendriyas, 5 Jnanendriyas, 5 Pranas, and Manobuddhi. 17 is the Sukma Sharira. So, Sthula Shariram is the Sukma Shariram, now Karana Shariram. So, none of these Shariras is the Atma. What is the Karana Shariram? Karana Shariram kim? Anirvachya Anadi Avidya Rupam Shariradbhayasya Karana Matram Sat Swarupa Ajnanam Nirvikalpa Rupam Yatasti Tat Karana Shariram. Karana Shariram is very simple, straightforward. Karana, causal body. Why causal body? Because it's the cause of the other 2 Shariras. What are the other 2? The Sukshma and the Sthula. It's like a little seed. You don't see a tree in the seed, but the little seed has a complete programming in it for a huge 90 feet, 100 feet tree. So that is the Karana Shariram. And what are the general aspects of the Karana Shariram? Here we are getting into little abstract concepts, so please pay attention. So number 1 is Anirvachyam. Anirvachyam means it cannot be explained in words. Anadi. Where did this come from? We don't know. So there is what causes the Karana Sharira? We don't know. So that's why we call it Anadi. So Anirvachyam Anadi Avidya Rupam and Shariradbhayasya Karana Matram is the cause of the other 2 bodies. So that is the general statement. And then so in his typical way, he says what it is not. So it cannot be explained in words. So bring home an example. All of us, each one of us, without an exception, go into your Karana Sharira when you are in a deep state of sleep. Mind you, deep state of sleep, not your dreaming, and then not your half state of sleep. In your deep state of sleep, you are in that Karana Sharira. So if I ask you, explain, tell me your deep state of sleep, how are you going to explain that? Can you explain that? Anirvachyam cannot be explained in words, inexplicable. So where did that Karana Sharira come from? We don't know. No cause for causal body, it just is. So if I say it originated from void, how can something originate from void? If I say it originated from knowledge, Shankaracharya is going to tell you it is not knowledge, it's ignorance. So ignorance cannot come from knowledge. So neither it originated from void nor it came from knowledge, it just is. Tirumala beautifully would say that. Pati pasu pasam yanapahar ivai mundril. That is Saiva Siddhanta. In 4 lines he says so simply. Pati pasu pasam yanapahar ivai mundril. Padiyinai pol pasu pasam anadi. The day that Lord was there, the day that Parabrahman was there, the Maya was there too. And the bondage was there, the ignorance was there, the Karana Shariram was there. Pati Pasu Pasam. Pasam is the bondage that consists of Anavamalam, Kanmamalam, Mayamalam. These 3, the wrong sense of ego, Anavamalam, Kanmamalam, the karma, all these 3 strands, Maya, and these 3 strands make the rope of Pasham. So Pashu is all us. So these 3 strands of rope binds the Pashu to the cycle of birth and death.
Pati pasu pasam yana paharivai moondril padinai pol pasu pasam anadi. So the day that the Lord was there, the Maya was there, the Pashus were there, the bondage was there. So you cannot ask why it was there. We don't know. It was there. So, Enapaharivai Mundril, Padinai Pol Pasupasam Anadi. They were all eternal, Anadi. They were like three parallel lines running all the time. Padinai Chandanuha Pasupasam. The Lord is beyond these two. Pashu was bondage. But the Pashus, us, and the Pasham, the bondage, cannot even touch the Lord. These two parallel lines below cannot even go towards the top line called the Lord, Parameshwara. Padine Chandra Anuha Pasupasam. They cannot go, you cannot even move. Padi Anihil Pasupasam Nillade. But the moment the top line showers its grace upon this Pashu, then Padi Anihil Pasupasam Nillade. The two lines disappear and become merged with that one line. So that is why Avan Arulale Avandal Vanangi. You need His grace to worship Him and get liberation. Without that, nothing is going to happen. Even to attend this satsang, you needed His grace. You needed that satkarma. Nothing will be done. So like Bhagavad Gita says, millions of trillion, billions of people are here in this world. How many even think of all this? They're all lost in this whirlpool of everyday activity. Kandade Kakshi, Kundade Kolam. So, it's with the grace of the Lord that you will get to ask these questions, try to understand these things, and even to approach Him. So when you start, when you take one step, He takes two steps. So then when He takes two steps, then Pashu bondage is just blown away. He just touched Monica Vasagar, everything was shattered, gone. Bondage was gone in a fraction of a second. So we have to strive. We have to take our steps. We have to do our part. Then He will do His part. So Anadi. So the Karna Shariram came on. Then it cannot be explained. Avidya Rupam. It's an embodiment of non-knowing. So what is avidya? Yahana vidyate saha avidya. Something that is not known is ignorance. Is non-knowing. Something that is not known is non-knowing or ignorance. And it has a rupam. So it has no form or shape or anything. And then this is the shariradvayasya karana matram, cause of the sukshma and sthula shariras. So that is what it is not. In terms of what it is not, cannot be explained, it has no origin, and it is form of ignorance. So then what it is? It's ignorant of its own nature. Sat-swarupa jnanam. It doesn't even know its own true nature. So that karna sharira. What is its true nature? That Atma. Even though it's so close to the Atma, doesn't even know its true nature, that it is the Atma. So Patanjali Beautiful says, the yoga chitta vritti nirodha. What is yoga? The cessation of the turbulence of your consciousness. And all the thoughts settles down. Yoga chitta vritti nirodha. And that happens when all this storm and tsunami and hurricane and everything is gone. That is what yoga is. Yoga is not standing upon your head or bending over backwards. Yoga chitta vritti nirodha. Patanjali, authority on yoga, the last word on yoga, this is how he defines it. Chitta vritti nirodha. Yoga is the settling down or complete cessation of the waves of turbulence. Cyclones all gone, hurricanes gone, tsunami gone. Complete, the ocean is in this complete dignified state of nischanchala. Complete state of quietness. Yoga chitta vritti nirodha. When that happens, what happens? Tata drishtaha swarupe avasthanam. Then he is established in his real self, in his swarupe, in his swarupam, in his own real nature is established. When that doesn't happen, when the cessations
doesn't happen, so there's still turbulence, there's still tsunami. So what's going to happen? You're going to be identifying yourself with the tsunamis, with the waves, with the hurricane, with the cyclones. So when everything settles down, is there anything to identify with? No. So then what is there? Surupe avasthanam. That's what he's here. Sat Surupa Ajnana. Karna Shariram is ignorant of its own Surupa because it's still not free from all these cloudy, these vasanas. So everything is in the very sukshma state, in a subtle state. So that's what gives rise to the other two shariras. So Sattva Swarupa Jnanam, ignorant of its own true nature, not knowing my true nature, I give rise to and identify with the above two. Same way as Tirumala says very beautifully with a household example, Ponnai Maraitadu Ponnani Bhushanam, Ponnil Maraindadu Ponnani Bhushanam, Tannai Maraitadu Tan Karanadigal, Tannul Marindadu, Tan Karanadigal. The Karanadigal is all these Antakaranas that you're talking about, the Sukshma Shariras, the Karana Shariras, Antakaranas. The Karana Sharira is one of the Antakaranam. So that hid the reality of the Atma, Tannai, Atma. So just as the ornaments hid the reality, you see only a bangle, you see only a necklace, you see only a waistband, you see only a wristband, you see only a earring, you see only a nose ring. You don't see the real gold that is given this form. So Ponnai Maraitadu Ponnani Bhushanam, Marattai Maraitadu Mamadayane, same way. Marattul Maraindadu Mamadayane. So same way, Ponnil Maraindadu Ponnani Bhushanam. So when you melt all the forms away, nothing remains but gold. So what has happened to all these bhushanams, all these different ornaments that I was telling you, the nose ring, the earring, the waistband, the wristband, the necklace, what happened to all that? Ponnil Maraindadu. They all went and disappeared into that pon. So what remains is just the pon. So same way, this Antakarana, the Karna Sharira, the Sukshma Shariras, they hid the Atma. Tannai Maraitadu Tan Karanadigal. When the Atma realizes that it is none of this, so what's going to happen? Tannul Maraindadu Tan Karanadigal is all these Karanas, the Karna Shariras, the Sukshma Shariras, all this go and disappear into the Atma. What is the other aspect of this Karna Shariram? Nirvikalpaka Rupam. It's like there's no thoughts of I am this or that. So when you're in a deep state of sleep, you don't even know you're a man or a woman. Forget about how old you are or what profession you have, what education you have. You're in a deep state of sleep. Your complete state of ignorance of all this, what you thought you were. Nirvikalpaka Rupam in the Karna Sharira. When you go into the Karna Sharira in the deep sleep, Jati, Varna, Vyavasaya, profession, none of that exists there. So that is total Nirvikalpa. But it's not Samadhi, it is Nirvikalpa Rupam. The Nirvikalpaka Rupam. It's a form of ignorance there. Ignorance in a different way, that there is no identification anymore, knowingly that I'm a man, I'm a woman, I'm 5 feet 10, I'm slim, I'm fat, none of that. So, Nirvikalpaka Rupam, Sat Swarupa Ajnanam, and then what else? Avidya Rupam, Anadi, Anirvachyam. So, these are all your causal bodies, which the Atma is not. So remember the definition of Atma, that is Tula Sukshma Karna Sharira Dyatiriktaha. It's other than this Tula Sukshma Karna Shariras. And the second aspect, Panchakosha Tita San. This we will see in our next class. So we'll just conclude with this, that the Atma that identifies with the Stula Sharira is called Vishwa, or in Tamil we call it Vishwan. And then that identifies with the Sukshma Sharira is called Tejasa Atma.
And then that once as in identification with the Karna Sharira is called the Prajna or Prajnan in Tamil. So these are just words to be familiar with because they will be used later on. The Atma that is in identification with the Stula Sharira is Vishwan, with the Sukshma Sharira is the Tejasan, and with the Karna Sharira is Prajna, which the Atma is none of this, but the Shastras have given these different states of identification, different names. So this is what the Atma is not. Then it's a witness of the three states, waking, dreaming, and sleeping. Then it is Satchidananda Swarupam, which we will see in our next class. Om Namah Shivaya. If you have any questions, we will address. Atmakaha Stula Sukshma Karana Sharirha Vyatariktaha. Vyatariktaha, other than the three bodies. What are the three bodies? Stula Shariram, Sukshma Shariram, Karana Shariram. Atma is none of this, it's other than this. So then Acharya described to us what is Stula, Sukshma, and Karana Shariras. And that's where we stopped last week. And then what else is Atma? Atma is also Panchakosha Aditaha San. And then Avastha Traya Sakshi, it's a witness of all the three states of consciousness. Then what it is really, then it is Satchit Ananda Swarupam. So that's Atma. So we will start now with our second aspect of Panchakosha Atitaha Avasthatraya Sakshi. Even though this is the sequence in the Tattvabodh, Acharya start with Avasthatraya, then discusses the Panchakoshas after that. Okay. Avasthatraya Kim. What are the three states of consciousness? Avasthatraya. Three states of consciousness. Jagrat, Swapna, Sushupti. Waking, dreaming, sleeping. Jagrat, Swapna, Sushupti. These are the three avasthas. Avatishtati iti avastha. So you're established in that, or you're revolving in that, you are staying in that state of consciousness for a while, briefly, going in between one and the other. So they're called avasthas, transitory avasthas. Then the Acharya tells us what are the different avasthas, starting with Jagrat avastha. Jagrat avastha, it's a beautiful definition here. What is waking state? Avasthatraya Sakshihi. So the Atma is Avasthatraya Sakshi. Avasthatraya Kim Jagrat Swapna Sushuptavasthaha. Jagrat avastha ka. What is waking state? So please pay attention to the definition here. So Shrotradi Jnanendrehi. Shrotradi Jnanendrehi. All the perceptions, all the organs of perception, Jnanendriya, which is starting from your ear, eyes, nose, taste, sense of touch. So Jnana Shrotradi Jnanendrehi. Shabdadi Vishayascha Nyayate. So Shrotram, the function of Shrotram is Shabda Grahana, that we saw in our last class. So Shabda Grahana. So Shrotradi Vishayahi, Shrotradi Jnana Indriyahi, Shabdadi Vishayascha Nyayate. Just one example here, just the ear. So through the Jnana Indriya, through the organs of perception, like the ear, Nyayate what? Shabda Adivashayascha, like objects like the sound, noise. So when you perceive all these, so Shrotra, Shabda, and then through your eyes, see the drishtis. Through your sense of touch, you feel, and through your tongue, you taste.
through your nose, you smell. So all these included. So you're just giving one example there, Srotradi. Srotradi means all the rest of it is included, and Shabdadi means all the rest of it, Vishayas are included. So Srotradi Jnanendriyahi Shabdadi Vishayascha Nyayate. Knowing the objective world, all these through these senses, experiencing the external world through the senses, that state is Jagrat Avastha, state in which the organs of perception perceive the objects, sound, etc., in the waking state. And the science has come to some extent to define this in terms of brainwave coherence and also brainwave frequencies, and also in terms of physiological parameters. We'll touch upon it really lightly, not too much into details, but the basic understanding about all this. So what avastha goes with what kind of brainwave frequency? We'll come back to this in just a couple of minutes. So that is Jagrat Avastha. And in Jagrat Avastha, the truth or the experience is what you call Vyavaharika Satyam. It means, so what you see is in a crowd, or if you're attending a class, so everybody's in this class, everybody's seeing the teacher. So that is Vyavaharika Satyam. Everybody is hearing the teacher. Whereas in dream, opposite to as contrasted with the Vyavaharik Satyam, it's called Pratibhasika Satyam. Pratibhasika means that reality in dream is only for you. That so-called reality in dream is only for you, and that is a reflected reality, Pratibhasika Satyam. Reflected means whatever you have experienced in the waking state, reflected from that, from the vasanas absorbed in the waking state, from the recordings done through the waking state, from all that is encoded through the waking state, and that comes out as a reflection, comes out as a world that's created for you. That dream world is known as Pratibhasika Satyam, and that is only true for you, whereas in the waking state it's called Vyavaharika Satyam. And the Atma, now we are still in the waking state definition. The Atma that identifies with everything that is in the waking state, that Atma is called Vishwa. So we have to remember that this Tattva Bodh is the preliminary text for Advaita Vedanta. So you'll have all these technical terms because these are used, most of these are used in many Upanishads. Even though Tattva Bodham we talk about as a preliminary text, is a very comprehensive text. If you understand everything in Tattva Bodham, pretty much you got Advaita Vedanta under your belt. You got a very good grasp, and then you can go on and decorating it, adding bells and whistles by reading the Upanishad. But this is all it is. This is where it starts. This is where it ends. So pretty much what you have here. So that's why all the words are here. So Stula Sharira Abhimanyatma Vishwa Ityuchyate. That Atma that identifies itself with the Stula Shariram is called Vishwa. So that Stula Shariram could be a Shariram for a woman, Shariram of a man, Shariram of an elephant. So any Jiva Jantu, anything, so the Atma that identifies, okay, I'm this body. So that Atma is called Vishwa. Anything that has a body, a form, so that is Vishwa. Stula Sharira Bhimani Atma Vishwa Ityuchyate. I put it up there, Avastatraya Sakshi Atma is a witness of all this. So the second state, Avastatrayam, Swapna Avastha.
Swapna avastha ketiche. What is the dream state? Jagrat avasthayam yad drishtam yad shrutam tad janita vasanaya nidra samaye yah prapancha pratiyate sa swapna avastha. What is swapna avastha? The swapna avastha happens during sleep. Nidra samaye. Nidra samaye, what happens? Prapancha pratiyate. A world is created. And created out of what? Vasanas, impressions, recordings. So what kind of recordings, what kind of vasanas? Tad janita, born out of. Born out of what? Whatever was seen, yat drishtam, yat shrutam, whatever was seen, whatever was heard, whatever was felt, whatever was experienced, all that is included. Now, whatever experience you underwent during Jagrat Avastha, that gets recorded as Vasana. Born out of that Vasana, Tad Janita, during the time of sleep, the world that was created, Prapancha Pratiyate, that is your dream state. That is Swapanavastha. Beautiful definition. Okay. And what is, so this is, as I said, Pratibhasika Satyam, because this is only true for you, because it's a reflection of whatever you have experienced in the waking state. So, and what is the Atma called? Atma in the state of dream that identifies with self with Sukshma Sharira, because in dream you're in your subtle vehicles, you're in your subtle bodies. So the Atma that identifies with your subtle bodies, Sukshma Sharira Abhimani Atma, Tejasa Itvichyate. So that Atma identifying itself with the Sukshma Sharira is called Tejasa. And then what is the third state? Deep sleep. So there's not waking, not dreaming, but deep sleep. So Shushupta Avastha Ka, these are very straightforward definitions. What is the dream state? Aham kimapi na janami. Number one, dream state. I didn't know anything. I do not know anything. I did not know anything during deep sleep, and I slept happily. That much we knew. That much we knew. What we knew, that it was a very comforting experience. It was kind of a joyful experience to go in a deep sleep. We experienced some kind of a joy, some kind of a fulfillment, but they didn't know anything. Knowledge-wise, zero. They did not know anything. Aham kimapi na janami, sukhena maya nidra anubhuyate. Sukhena maya nidra anubhuyate. Iti sushupta avastha. Sukhena. I slept very happily. Nidra anubhuyate. So this is the deep sleep. Now, what is the Atma that identified with the Karma Sharira? Remember, from our last classes, each one of the states has the Sukshma Shariras identified with this. So the Karma Sharira that's identified, that Atma identifies with, the name of the Atma for practical purposes in Vedanta that identifies with the Nidra state is called Prajna. Prajna. So Karana Sharira Abhimani Atma Prajna Ityuchyate. Atma identifying itself with the causal body is Karana Sharira. Why is called Prajna? Prakrishena Ajnaha. Complete ignorance. Total ignorance, not 99.9%. It's 100% ignorance. Because you're completely lost. I did not know anything. So it's called Prajna. So those are the three states, and Atma has nothing to do with any of these. None of these three states are Atma.
even though it gets a connotation, even though it gets colored, even though it gets these names, Atma is a witness of all these three states. Atma is a witness of all these three states. Now, science. The human brain waves, after the technology came in the EEG, electroencephalograph. What electroencephalograph is nothing but a bunch of electrodes connected to an amplifier. So as you know, your whole body is an electric generator. Your whole body is an electric generator. You're able to hear me good? Someone can unmute and let me know. Oh, yes, Vijay. Because I didn't have the microphone hooked up. Hold on. Okay, good. I just put it on. Good. Okay, so what is electroencephalograph? Is this, that your body is pretty much an electric generator. Why we call it electric generator? Because your heart works by electrical impulses and your brain emits electrical impulses. When the rhythm of your heart is not right, then the cardiologist will give you what is called a pacemaker. Pacemaker is nothing but that regulates electrical impulses in your heart, and that's why you are able to do what you call electrocardiogram, because these are all electrical impulses coming out of the heart, and that's why we are able to do electroencephalograph, encephala meaning for your brain. So encephalograph is electrical activity coming out of your brain. But the only difference is this electrical activity, this amount of electricity is very minuscule in terms of microvolts. So if you have your household battery that's 3 volt or 2 volt or 1 volt, most of them are 3 volts. If you divide it by 1,000, that's called a microvolt. So this is how much electricity coming out of your brain, microvolts. So what these EEG is that leads are connected to different parts of your brain. The frontal portion, then the back, the parietal portion, then the occipital portion, and then the left hemisphere, the right hemisphere, then the frontal, and as I said, the occipital and the parietal. So these are different areas of the brain to which you would have like a little electrical electrodes connected, and these wires, would bunch of them from different parts of your scalp would be fed into different channels of a little amplifier. So all that the amplifier does is amplifies the signals from your brain. And that is the second part. So once these signals are amplified, then the signals are fed to pens, like a pen that will be oscillating. So depending upon how much electrical activity coming out of your brain, that how much oscillation would be there. So if you look at my finger, if your brain activity is very slow, the pen would move very slowly. And if your brain activity is very hyper, the pen would move very fast because electrical activity, the frequency of waves is very high. So if the electrical activity is high, it will move very fast. Now, when the pen moves like this, there is a paper moving underneath the pen. The paper moves at a constant speed. The paper moves at a constant speed. In other words, in 1 second, the paper would move, let's say, 1 inch. So let's, for the sake of our class, let's say this distance that you see on the picture is 1 inch in 1 second. In 1 second, the paper moves 1 inch. So the pen just moved left and right 3 times. So this is what the pen draws on the paper. So when the pen starts moving a little faster, in the same distance, it'll draw more waves, more frequency. And if the pen moves
little faster. Why would the pen move a little faster? If your electrical activity from the brain is a little hyper, they'll move faster. So depending upon how fast the pen moves, and depending upon how much electrical activity generated in your brain, that much frequency is recorded on the paper. So, and these are divided into 5 categories. So the delta waves are the slow waves, and that is almost like 1 to 3 frequencies. And the theta waves from 4 to 7 frequencies, the same time. And the alphas are 8 to 15. And the beta waves are called 16 to 30. If the pen moves 16 to 30 times, I call beta waves. Anything above 31 is called gamma wave. Now, these electrical activity in your brain are associated with the different states of your consciousness: waking, dreaming, and sleeping. Your drowsiness and sleeping is the delta waves, very slow frequency. And then your awakened state, like instead of meditation and alertness, you have theta waves. Alpha waves is your alert. So beta waves is alertness and concentrations, intense focus and cognition. And gamma waves is like superconscious, like you're in a deep state of meditation. So those are gamma waves. And occasionally, any of these could be generated in any of these states. Like during your sleep, you have a spindle of this gamma, but they'll be very, very transitory. Like you have just all of a sudden, you have a burst of gamma waves just for a microsecond. So that's that, but then there won't be like a steady pattern. So that's, having understood this, why we are talking about this, because we said that Atma is a Sakshi, witness of all this. So which means when there is a witness, that's another state of consciousness. So we are waking, dreaming, and sleeping. Jagrat, Swapna, dreaming, and Sushupti, deep sleep. Now beyond this, something that is witnessing all this, okay, I'm dreaming now, I'm sleeping now, I am awake now. Because unless somebody is witnessing, you would not know you are dreaming. Because you see yourself in the dream. So unless somebody is witnessing, you won't see yourself in the dream. And unless somebody is witnessing, you wouldn't know you slept good. And unless somebody is witnessing, you wouldn't know you're awake. So who is that witness? That is called the Turiya. That is the fourth state. That is the witness stage. That is the Atmasthiti Avastatraya Sakshihi. Vasudevendra Yogindram Natva Jnana Pradham Gurum Mumukshunam Hitataya Tattva Bodho Vidhiyate.